मौजूदा वक्त में दुनिया में भारत के दो नेता अपना भौकाल बुलंद कर चुके हैं। एक है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। एस जयशंकर पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाते हैं और अपनी बात मजबूती से रखते हैं। क्या रूस, क्या अमेरिका, क्या पाकिस्तान, क्या चाइना, हर मुद्दे पर एस जयशंकर खुलकर बात करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान को समय समय पर उनकी औकात भी बताते रहते हैं। अब एक बार फिर जब पाकिस्तान ने भारत पर उंगली उठाई तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब दे दिया। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे का राग अलापा। बिलावल ने संयुक्त राष्ट्र में बोलने के मौके का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए किया, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने जवाब से पूरे पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल कर रख दी और उनकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ही आतंकी ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी, ऐसे में वो किस मुंह से भारत को उपदेश दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मुद्दे का राग अलापते हुए अपने बयान में कहा, विश्व व्यवस्था, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा परिषद कश्मीर मुद्दे पर अपने प्रस्ताव को लागू करे। परिषद की जिम्मेदारी है कि दुनिया में वो शांति को बढ़ावा दे। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने भी बुधवार को आरोप लगाया कि पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों में भारत की संलिप्तता है। यह आरोप वह पाकिस्तान लगा रहा है जो खुलेआम कहता है कि उसने दुनिया में तबाही मचाने वाले तालिबान को ट्रेनिंग दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दोगलापन पाकिस्तान के विदेश मंत्री और विदेश राज्य मंत्री दिखा रहे हैं। ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एक देश जिसने अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को शरण दी और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया, वो संयुक्त राष्ट्र में उपदेश देने के काबिल नहीं है। जयशंकर ने कहा, हमारे समय की प्रमुख चुनौतियां महामारी, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता इन मुद्दों पर प्रभावी प्रतिक्रिया पर निर्भर है। जयशंकर ने UNSC में आगे कहा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा सुधारित बहुपक्षवाद के लिए नई दिशा विषय पर खुली बहस की अध्यक्षता की। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो और हिना रब्बानी खान को उनकी औकात बता दी और बता दिया कि आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान किस मुंह से भारत पर उंगली उठाते हैं। गौरतलब है कि जयशंकर ने अपने बयान में भारत की संसद पर हमले का जिक्र किया। तो आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2001 को लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने संसद पर हमला किया। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, CRPF की एक महिला कर्मी और संसद के 2 कर्मी शहीद हो गए थे। हमले में एक कर्मचारी और एक कैमरामैन की मौत भी हो गई थी। तो आप इससे बाकायदा समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंक बढ़ा रहा है और समय समय पर उसकी औकात भारत बताता रहता है। फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान की पूरी हेकड़ी निकालकर उनको बेइज्जत किया है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। I shall now make a statement in my capacity as the External Affairs Minister of India. Honorable Ministers, Excellencies, thank you all for joining us at today's open debate of the Council on a topic of growing relevance. I particularly appreciate the presence of the UN Secretary General and the President of the 77th UN General Assembly. This is a reflection of the importance of the subject at hand. Excellencies, we have convened here today for an honest conversation about the effectiveness of multilateral institutions created more than 75 years ago. The question before us is how best they can be reformed, particularly as the need to reform is less deniable with each passing year. This debate and its outcome will not only help determine what kind of United Nations we wish to see, but also what kind of global order that best reflects contemporary realities. The need for a new orientation for a reformed multilateral system, or norms, as we titled it, flows from this widespread recognition. While the matter concerns the fullest constituency of member states, the Security Council too has an important stake in the consideration of this crucial question, because at the end of the day, it has direct implications for maintaining international peace and security. And it is in the fitness of things that such a discussion takes place as an open debate. All of us are aware that the question of equitable representation on and increase in the membership of the Security Council
has been on the UNGA agenda for well over 3 decades. While the debate on reforms has meandered aimlessly, the real world, meanwhile, has changed dramatically. We see that in terms of economic prosperity, technology capabilities, political influence, and developmental progress. The broad dispersal of capabilities and responsibilities has been expressed, for example, in the emergence of the G20. That realization is now steadily percolating through the wider membership of the UN. At the 77th UNGA, we were all witness to a growing sentiment in favor of reform. Our challenge is to translate that into concrete outcomes. The call for change has been accelerated by growing stresses on the international system that we have experienced in recent years. On the one hand, they have brought out the inequities and the inadequacies of the way the world currently functions. On the other, they have also highlighted that a larger and deeper collaboration is necessary to find solutions. Let me give a few examples. During the COVID pandemic, many vulnerable nations of the global south got their first vaccines from beyond their traditional sources. Indeed, the diversification of the global production was itself a recognition of how much the old order had changed. The knock-on effects of conflict situations have also underscored the necessity for a more broad-based global governance. Recent concerns over food, fertilizer, and fuel security were not adequately articulated in the highest councils of decision-making. Much of the world was therefore led to believe that their interests did not matter. We cannot let that happen again. When it comes to climate action and climate justice, the state of affairs is no better. Instead of addressing the relevant issues in the appropriate forum, we have seen attempts at distraction and diversion. On the challenge of terrorism, even as the world is coming together with a more collective response, multilateral platforms are being misused to justify and protect perpetrators. Each one of these examples makes a strong case why it should not be business as usual in the multilateral domain. We not only need to increase stakeholdership, but also enhance the effectiveness and credibility of multilateralism in the eyes of the international community and in the eyes of global public opinion. That is the purpose of NOBS. Excellencies, if this is to happen, member states from Latin America, Africa, Asia, and small island developing states should have credible and continuing representation in the Security Council.